screen again. Shall Okay. I share So again? can you share? Ah, Yeah, please. Yeah. yeah, we are here. Just yeah. Okay. Now here, based on this, okay, have two examples in detail. Pick them up directly from your thesis and put it here. No, pick one example which is single. Hmm. Okay, and then at Single, an single means overall level, where one mentor, one mentee you're talking. one Pair, mentor, one mentee. Correct. pair. Correct. Hmm. So where you did this initial process, transcription, then coding, axial, and Right. then selective coding. ये हो गया उसके बाद में at a group level you've done triangulation with secondary sources, member checking this, that, blah blah, and the all the other. So you say now at an overall level, when I aggregated it, these are the selective and refining into core themes that came up. Correct. Now based on that, I did all this validation exercise, and this is how I did it. Show it that you've done it. Put it in the PPT. Okay. Okay. Once you show all of that, and then based on all these and more, now I have the now come to the results. Then come to the results. वो piece missing है बीच में. Yeah, इसके बाद है मैडम वो डाल दूंगा मैं. I got it. मैंने I think वो You annexure इसमें understand what I'm नहीं. saying? Yeah, yeah. हाँ. Basically, what you are trying to say is that suppose process ले लो, for transcription of interviews, initial coding, axial coding, selective coding. Correct. So for one Correct. pair of mentor-mentee, what was the transcription of the interviews? So in that we Correct. had about 18 questions for mentors and all that part, and so many questions for mentees. So that is one pair. So these were Correct. the So that was the transcription. questionnaire. So you can say Yeah, this was broadly questionnaire, discussion guide. This was Don't say questionnaire. Say discussion guide. question guide. Yeah. Correct. So you say this was this discussion guide. This was this discussion guide. Based on this, these are two transcripts. Okay. Correct. Now this is the at an individual level. This is how we did the transcribing, then coding, axial, and then selective, and then so this we've shown you one each. Then at an overall level, we aggregated everything for mentors, for mentees, and then both together as well. So when we did that, these are the core themes that emerged. Only for mentees, these were the core themes. Only for mentors, these were the core themes. When we put them together, these were the core themes. Right? Then we did validation. We triangulated using secondary sources. We did member checking so that I asked two more of my researcher friends or whoever else you may have asked. So you put that in that they also did, and what did they do? Right? So they try to, don't just say that I went and spoke to somebody. No. This is a research. So research has to have a process which is documented. Even if it is qualitative, it will be a documented piece. So how did you document all of that? And then you did peer debriefing to reduce the bias further. How did you do it? Which means I spoke to these 5 people, and we reduced bias, we removed some of these statements, we removed some of this. Explain that whole process fully. Otherwise, qualitative research falls in the area and realm of kite flying. And kite flying means no work was done. And in quantitative, you can show numbers 500, 600, whatever. You've Yeah. got only about 19 twos are 38. That is the total number of interviews you have, max, Correct. tops. Okay. So when you look at only those many, if you've not massaged that data enough to account for 500, your kite will not fly. Correct. Okay. So we need to ensure that that is done. You do one mentor, one mentee, take them from transcript to analysis, then say overall mentors, this was the core themes. Overall mentees, this were the core themes. When I added in the core themes from the pilot, this is what it all became. Then we validated it all together in this way. Once this was done, then my findings. ये बीच में पूरा पीस मिसिंग है. ये तो ठीक है. इसके बाद में उसके बाद में मैंने थोड़ा उसका ही एक्सप्लेनेशन है बस. बेसिकली I'll go back. करेक्ट. So this का ही extension है basically results and discussion only I put more in a
more lucrative way to look at. And योर पीपीटी हैज टू बी लॉन्ग, इट्स अ स्टोरी। आपने फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाला है, आपने 50 लोगों से डिटेल में बात ये है करी है। मैडम, कोट्स के लिए है अभी, सपोज इसमें मेंटर नंबर 5 व्हाट इट ना इज। ना, नो, कैंसल कैंसल, नॉट ओके। तो ये हमने दिस theoretical quantum। दिस हैज नो मीनिंग। आई वांट डेटा, actual data, how you analyzed it, how you put the whole thing together. It's not coming through. है ना हमारे पास कोट से बहुत नहीं होगा, डेटा एक है स्लाइड से मैडम, क्या होगा? पूरा डेटा है हमारे पास, ये क्वेश्चन तो ये। डालिए वो, तो डालिए। ये सब डाल सकते हैं हम, क्वेश्चनर्स है, यहाँ से शुरू कर हाँ, सकते हैं, और यहाँ पे मैं वो एक मेंटर मेंटी का डाल देता हूँ अभी, वो एक करता हूँ। करेक्ट, So that I'll करेक्ट, explain in detail. So I'll spend more time on one करेक्ट। mentor mentee combo. Yes, Bring out all not these more kinds of time, lots of clouds. time. At least 45 minutes you are spending just on ये लिया, फिर इसको इस तरह से पहले इनिशियल ऐसे किया, फिर उसके बाद में ये देखो, ये सब कुछ तो है। वो क्यों नहीं है आपके बाद में, क्यों है ये बाद में? हैज नो मीनिंग। Hey, हाउ डिड यू where I डू have to इनिशियल कोडिंग? How did you do initial coding? basically after that questions and answers I captured, I did the input in the deduce software. Like there's a Correct, to add it correct. all questions, all responses. It's more like a Hmm, data entry kind of a work what hmm, we do. hmm, hmm, Similar way we hmm, do in deduce. So that was the hmm, initial input, you can say, not coding. And then hmm. after that, the process of initial coding was started. Correct. So you please show it somewhere. See, qualitative, they don't understand. So you have to show them everything. हर चीज का एविडेंस आपको दिखाना है जो नहीं आ रहा है अभी। Have to show, get that in. आपने एंट्री करने के बाद में पहला क्या किया, फिर दूसरा क्या किया, दिखाइए ना। वो 5 6 7 8 स्क्रीन जो आ रहे हैं, उसके हाँ बेसिस पे आपने की थीम जो निकाले वो दिखाइए ना। वो क्या फर्क पड़ता है, यू शो एवरीथिंग। ठीक है मैम, वो कर लूंगा मैं, करके भेजता हूँ मैं अब, और एक अपडेटेड। वो ऐड करिए, वो ऐड करके उसके बाद में ही, और उसी तरह से आपका थीसिस भी उसी बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड होगा। which is you first do the five, like I said, the five pilots that you did. हाँ, every pilot पे दो दो पेज, not much, 2 पेज, उनका एनालिसिस एवरीथिंग। एंड देन द 11th and 12th पेज विल बी पूरा उनका एनालिसिस, उसमें से कोर थीम्स, व्हाट वाज द डिडक्शन, हाउ दैट इंपैक्टेड योर मेन स्टडी, राइट? देन द मेन स्टडी फाइंडिंग्स, every transcript. At the end of the transcript, the no, not the transcript goes at the in the annexures, but every interview ka aapka themes, then overall basis pe themes, then uska validation, then you discuss the results. ऐसे है वो। अभी वो मुझे रिगर नहीं दिख रहा है अभी तक, एंड क्वालिटेटिव में रिगर नहीं दिखा तो फिर तो गए। एंड नाउ वी कैनॉट हैव अ रिवर्क। अभी मतलब रिवर्क करने के लिए बोलेंगे, दे विल से कम बैक। Abhi, even if my friends are there, I cannot rescue it. Last time they allowed, because whether I have currency with Simbi or not, or then I had or I didn't have, uh, but with Gauri Joshi and with Shailesh Kasande, matlab, unless it is So something that committee will remains reflect same, madam. more, Normally committee remains yes, the same. it will remain the same. ठीक है, मैं करता हूँ मैडम, ये थोड़ा अपडेट करके एक 3 4 डेज में मैं करता हूँ, करके भेजता है मेरे पास सब। Please, I'll just add and send I it to you. know. Now you please put it in the right format and send How it. is it come up, madam? Far better now, where we were. Much better. अब ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ नहीं किया है, कुछ समझता ही नहीं है, सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर है। वो नहीं लग रहा है सिर्फ।
ठीक है, but I करूंगा, need वो भी that कर लूंगा evidence. अभी। आई थिंक इधर तक आया हूँ तो ये भी फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है मैडम। बहुत लोगों ने, मैंने टाइम में शेयर किया था ये, तो उन्होंने भी बोला मेरे को कि फ्रेमवर्क इज गुड। Uh, then then this is very important. So you can say that I can take it to my professional networks as well and tell them how to mentor better. यस यस यस। ओके, Okay. थैंक यू, इसको स्टॉप करता हूँ मैं। Yes, sir. थैंक यू मैम, Done है? थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गई, क्योंकि हाँ, बात तो कर वो सकते डाल हैं दो बट। आप, फिर इट विल बी बेटर। हाँ आप डेटा डाल दोगे तो इट विल बी फाइन। हाँ हाँ, नो आई गॉट इट, इट इज देयर। सी इफ आई हैव डन 14 इंटरव्यूज, इट इज देयर 14 इंटरव्यूज, आई एम नॉट क्रिएटिंग इट। करेक्ट। 14 का करेक्ट। इंटरव्यूज का एक एक का इतना इतना क्वेश्चन किया है, वो सब एक्सेल में भी हाँ, रेडी है हमारे पास। पूरा एक्सेल एक डंप दिखा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट हम स्लाइड में ला सकते हैं, है मेरे पास। प्रिसाइसली। अरे डेड्यूस का सॉफ्टवेयर का वन वन स्क्रीनशॉट ही तो वन डाला है। वन एविडेंस। Remember या what Shailesh mentioned? Show us how you did it for one. या करेक्ट। So we show how we did for one, then we show aggregation, then we या show validation, and therefore the findings. That यस is यस। what we have to do. वो बिल्डअप ही नहीं दिखा उनको। आपने बहुत नहीं, सारा जनरल ज्ञान दिया उनको, दैट दे वर नॉट ओके विद। नो नो करेक्ट, आई थिंक अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, मैंने भी सीख लिया सीखने के लिए That सबको is the सीखना purpose पड़ता of a है। PhD. Yeah, yeah. यस यस, so we have to learn, it's a good thing, whatever happens for good, so। Yes. Yeah. और As मैडम long as कैसे you हैं? can put it all together. बिल्कुल ठीक है। अभी now, let's say in the month of September, if we towards the end of September or the beginning of October, let's target for your pre-submission. Then you will get, क्योंकि pre-submission करोगे तब thesis देना पड़ता है या आजकल। And once you do that, then it will go out for review. Once it goes out for review by December, we'll hear back. So either in this year or in Jan 2026, we will do the final defense. यही टारगेट करना है, ठीक है? So मैं that करता हूँ मैडम, क्या करता हूँ now, अभी, मेरे को ग्रिप है, व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू टेक सम टाइम ऑफ योर्स, एक एक। अभी मैंने 4 स्लाइड ऐड किया, तो ओनली दोस 4 स्लाइड्स आई सेंड, सो दैट ये सब ज्ञान हम्म, पता है आपको कि ये सब फिक्स हो गया है। है। मतलब मुझे हाँ अभी ब्रोकन। सिर्फ बीच वाला हाँ दो। हाँ जस्ट वही, अभी शो मी द पैर में दर्द इंटरेस्ट। है तो पैर वाला ही बेचता हूँ, सो दैट सिर्फ उसको हम Otherwise, एड्रेस करेंगे yeah. तो And आप जल्दी mentoring is बढ़ेगा about आगे। being focused. हाँ, नहीं तो आपको भी क्या लगेगा, अरे 40 स्लाइड है बाद में देख लेंगे, ऐसा लगेगा। अभी मैंने 5 स्लाइड्स भेजा नहीं मैडम, नहीं ये नहीं, फाइव now स्लाइड्स show पे। me only that. Everything else हाँ is fine. या So actually, even your results and interpretation जो है, I'm not very happy with that as well. या पहले इसको फिक्स Not करते हैं ना मैम, nice. इसको एनालिसिस पे पार्ट पे फिक्स करते हैं, देन वो आई थिंक दिस विल Correct. रिफ्लेक्ट ऑन माय दैट पार्ट, एक्चुअली इट इज Yes. अ Yes. मिरर Yes. इमेज है ना उसका, तो वही आएगा उधर भी। Yes. Correct. Correct. ठीक है, Yes. थैंक यू So you मैम, have थैंक to यू। come up with a conceptual model. या For यस, mentoring, you have to come up with a conceptual model. That is what a qualitative thesis will give you. क्योंकि वो मुझे फ्रेमवर्क अभी दिख नहीं रहा फ्रेमवर्क को कैसे हम लोग मॉडल बोल सकते हैं, वो देखना पड़ेगा मैम। हाउ वी कैन कन्वर्ट ऑन माय है। फ्रेमवर्क इनटू A मॉडल। framework. Yeah. So you will have to. So even if it's a broad framework which says that, okay, if a mentor has to deliver value, okay, then this is the different value that the person can deliver. And the mentee has to draw value, then the mentee should receive all of these things. So या if this is present, then the interaction and the relationship becomes sustainable, profitable, and it grows and it stays as a constant. Now this can then be, so the area limitation and area of future research is कि आपने validation नहीं किया whether this works, but you can say that once I looked at all of this, I actually you should go and speak with one more pair of mentor mentee. Once you come up with this model, then you should show this model to them and say, do you think if this is how your relationship was, would it work? कर सकते हैं। If it would work, why it would work, why it wouldn't work.
सो एक या दो इंटरव्यूज वो करके उसका शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट वो भी डालना है. So you did a qualitative validation, okay? But the fact that you need to do a quantitative validation will be your area of future research and study. And that is also the limitation. That आपने quantitative validation नहीं किया है. But करता हूँ मैं. qualitative validation करना पड़ेगा. ये सब काम है. खत्म है. करो अभी. नहीं हाथी नहीं गया करूंगा. पूंछ बचा, पूंछ का बाल बचा. नहीं नहीं अभी हो गया मैम. आई थिंक आई वाज आल्सो टू मेनी थिंग्स बट अभी मैं कर रहा हूँ काम फोकस करके. हाँ, ये फिनिश करिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, करता हूँ. ओके. यस. ओके. थैंक यू मैम. चलो. थैंक यू. ओके. बाय. बाय बाय.